is your NTEM syllabus, and it is very condensed, very small. You only have 3 new poets. 3 you have already done for your midterm, right? So you don't have to worry. The paper is very easy. There are no tricky questions. They are actually very direct in a sense, because I wouldn't make questions like those. There are 2 questions from me. They are tricky. They are not direct, but the rest of them, they are very direct. So you'll be able to do those, right? As you can see, I have numbered it for you from Shelley's, Lord Byron and Matthew Arnold's poems. These 3 poems you can have reference to the context. The rest of the poems will not have any reference to the context kind of question in your paper. Now, reference to the context, like Sajar has asked, are we going to have the entire stanza, few lines, a couple of lines? I wanted to give the entire stanza, but then we decided to shorten it. So you will have 3 to 5 lines from within the poem. It's not necessary कि कहाँ से stanza start हो रहा है वहीं से आपको line आए. Lines can be from anywhere. We have already established the fact that how you are going to actually attempt reference to the context. You are going to refer to the lines, where they're from, who has written them, who's the poet and the era. Context could be specific context of those lines, and generically you can give 2 to 3 lines, where does it come from. And in explanation, you are going to solely focus on the lines, and then critical appreciation could be there, critical analysis could be there, your stance, your voice could be there. Now, when I say your voice, please remember that quoting somebody's point of views is okay, but then you have to second it. Then you have to add your stance as well, that this is what this person has said, this is how Shelley has depicted it, and I believe it, or I second it. Somehow your voice should be there. Okay? I would highly recommend, do not use we. I know you have been instructed by another instructor to use we, which is more formal. I couldn't find any reference to it. There is no reference book entailing or telling us that we can use we. We can either use third person, this essay will focus on, this essay focuses on, etc. Or we can use once or twice I. Our personal pronoun, especially thesis statement में कहीं एक बार आप यूज़ कर सकते हैं. That's okay. That is not being authoritative. That is being responsible for your written piece. ठीक है? तो इस तरह से थर्ड पर्सन में लिखें. आप उसको क्लैरिटी में रखें और थर्ड पर्सन में. ठीक है? As far as Wordsworth and Coleridge and Christina Rossetti are concerned, from these 3 you will have thematic questions, essay type questions, and these questions can essay type questions can come from others as well. From all these 6 poets you can have essay type questions, and they can ask you to actually quote or refer to the text. Although the 3 poems that I have not mentioned are not asking for reference to the context, but it can ask you to refer to some quotation marks or from the text from the original poem in order to support your idea or your stance. So you cannot just leave them. You will have to go through the text. As you can see, now these are very limited number of poems. ऐसा ही है ना, बहुत कम हो गई हैं, तो आपने इनको देखना, और ये इतनी मुश्किल है भी नहीं. For example, Christina Rossetti, today we are going to talk about her. Her 3 poems are very short, lyrical and easy to remember, because the thematic canvas that she tries to portray is very relatable and understandable by the students. So you'll be able to do so. Similarly, Shelley's poem could be there for reference to the context, for essay type question, and it can ask you to talk about the poem from many perspectives, and it can ask you about how Shelley is part of the poem. If you remember, one question that I gave you in the mid was dualistic nature of the poem, in which personal struggles and literary development was there. So such kind of questions could be there, and you can categorize Shelley in certain lights for that. As far as Lord Byron is concerned, yes, we talked about that we are going to have She Walks in Beauty, but the other teacher, I don't know out of the blue, taught this one. So we are going to keep this one. Have we talked about it when we two parted ways? It's much easier and juicier to understand and remember. ठीक है, controversy है, याद रह जाएगा. बस नाम याद कर लें, कौन लेडी थी, कौन ड्यूक था और कौन ये, और कहानी याद कर लें, और ये याद कर लें कि किस किस्म के वर्ड्स. द पोएम बहुत छोटी है, 3 या 4 स्टैंजाज हैं, यू कैन डू सो. And then we have Matthew Arnold.
For Christina Rossetti, you're going to focus on symbol, themes, emotions, artistic values, and exploration. For Wordsworth and Coleridge, you're going to focus again on themes, symbols, emotions, and the influence of romanticism and their personal life on their poetry. You do understand that whatever era you're from, your poetry, your write-up is directly or indirectly a reflection of that. So you should be able to talk about that. Now you must be thinking how to prepare Wordsworth and Coleridge and Christina Rossetti and other poets. You can have one question. There is one question for compare and contrast. It could be between a romantic and a Victorian poet. It could be between two romantic poets, or it could be between two Victorian poets. It really depends question क्या पूछ रहा है. Compare and contrast always has, always would have more room for you to score, right? Comparison and contrast के लिए बहुत सारे phrases और words होते हैं. Look at those. Compare and contrast के लिए in comparison to, besides this, ठीक है, in reflection to, as compared to, ये जो expressions हैं आप use करेंगे तो आपका compare and contrast actually compare and contrast लगेगा. अगर आप ऐसे लिखें कि एक पोइट ने ये कहा, 4 पैराग्राफ्स उसके, एक पोइट ने ये कहा, और एंड में जाके कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ लिखें, विच इज़ ओके, इट्स नॉट इनकरेक्ट, इट्स इनफेक्टिव. इफेक्टिवनेस ये होगी कि आप अपने थीसिस स्टेटमेंट में बहुत क्लियर कर दें कि 3 या 4 या 5 या जितने पॉइंट्स आप डिस्कस करने वाले हैं वो साइड बाय साइड होंगे. अगर 2 पोइट्स हैं, 2 पोएम्स हैं, या 2 डिफरेंट एरा के पोइट्स हैं, तो उनका कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आपने ऐसे करना है. Other than that, you are going to have 5 questions in total and you are supposed to attempt 3. Please do not make any mistakes this time, right? Most of you have suffered in the hands of, not reading the instructions carefully. Please read the instructions carefully. And one more thing, I can make it easier for you, that there is only one question with 2 parts. The rest of them are statements, direct statements, no parts. No parts in the sense कि 10-10 की division नहीं हुई, लेकिन question में parts हैं, वो पढ़ने पे आपको पता चलेगा. यू गेट माई पॉइंट कि स्टेटमेंट कुड बी डेंस एंड लेंथी विच कुड हैव 4 to 5 पार्ट्स. वो आपको डिसाइड करना है कैसे अरेंज करना है, लेकिन एक्सप्लिसिटली इट इज़ नॉट स्टेटेड कि 10 मार्क्स इसके और 10 मार्क्स उसके, ठीक है. और एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड. Christina Rossetti's, there are 3 poems, a song which is also called, we'll see what it is called. Then we have After Death and In an Artist's Studio. तीनों पोएम्स में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं एंड टुडे विल इस्टेब्लिश दोज. और कोई बात है तो बेटा पूछें. आर्टिस्ट नहीं, आपने जो है देखिए मैंने इसके लिए लिखा है सिम्बल्स, थीम्स, इमोशंस, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ इन द सेंस कि हाउ डज शी टेक आर्ट एज अ पोइटेस, हाउ डज शी टेक अ लुक एट आर्ट. एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज़ एंड एक्सप्लोरेशन में आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस भी मेंशन कर सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट हाउ शी मोस्टली टॉक्स अबाउट लिरिकल पोइट्री, शी इज़ मोस्टली टॉकिंग अबाउट रिलीजियस स्टफ और द सोसाइटल स्टफ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड बाय डूइंग सो शी इज़ यूजिंग दीज वर्ड्स. शी यूजेस द वर्ड ओ पुअर बेबी, पुअर बेबी. दिस शोज पेट्रियार्कल स्टैंड्स दैट वाज देयर इन द सोसाइटी. अभी जब हम पोएम्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. आप कोई भी पोएम टेक्स्ट लेवल पे छोड़ नहीं सकते. यू कैन नॉट लीव एनी पोएम ऑन टेक्स्ट लेवल. द रीज़न आई हैव क्लियर पिन पॉइंटेड 3 points फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सो दैट यू कैन पुट मोर एफर्ट टू इन टू दीज 3, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक है. एनी अदर फर्दर क्वेश्चंस? Symbols are fine. Symbols are stylistic analysis or values कह सकते हैं. When you talk about themes, you can talk about symbols. Symbols actually add meaning to the thematic analysis only, right? कोई भी linguistic analysis है उसका मकसद meaning making ही होता है, ऐसा ही है. Imagery है, बिल्कुल है. Personification, वही 4 चीज़ें जो मैंने आपको बहुत basic बता रखी है. Repetition, ठीक है. आर्ट के ऊपर बिल्कुल उस आर्ट को डिपिक्ट करने के लिए वो सिम्बल्स ही यूज़ करती है ना, वो लैंग्वेज ही यूज़ कर रही है ना इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द थीम्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशंस. जैसे आपको याद होगा कीट्स, ठीक है, कीट्स जब भी किसी आर्टिस्टिक आर्टिफैक्ट की बात करते हैं तो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा था ना, तो उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हो सकता था ना. जैसे हमने बात किया कि अर्न को वो एज अ करेक्टर कैसे लेता, साइकी के लिए कौन से वर्ड्स एंड मेटाफर्स यूज़ करता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें
ये आप इसको अलग नहीं ले सकते. स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इज नेवर अपार्ट फ्रॉम थीमेटिक एनालिसिस. दे आर ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली गोइंग टू द सेम डायरेक्शन. ठीक है. हाँ, आप इसको लिंग्विस्टिकली एंड लिटरली उसको अलग कर सकते हैं इफ़ यू वुड लाइक, बट देयर इज़ नो नीड. आप उसको थीमेटिक में फोकस करें, साथ आप ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस ले लें फ्रॉम द टेक्स्ट. और बताएं. ये पेपर बता ही दिया है मैंने. दिस इज़ एक्चुअली पेपर.